Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In the continuation in the series of organic farming, topic is issues in organic farming. What are the issues? Actually, issues are small problems and they can be tackled and they can be handled easily, while the problems have a large impact and issue have a small impact. So there is a difference between issue and problem. तो इशू और प्रॉब्लम के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इशू की छोटी सी प्रॉब्लम कोई है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, दैट कैन बी टैकल्ड हैंडल्ड इजीली इज इशू, बट द प्रॉब्लम हैज़ लार्ज इम्पैक्ट एंड उसका जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी डिस्कशंस के बाद या काफ़ी वर्क करने के बाद आता है. वाइल इन केस ऑफ issues, this issue can be solved by the discussion or by small we can say their thinking. तो अगर हम थिंक करें और उस पर तो हम इशू को सॉल्व कर सकते हैं. तो इशू आर स्मॉल प्रॉब्लम्स विच हैव लो इम्पैक्ट वाइल प्रॉब्लम हैव लार्ज इम्पैक्ट. तो इशू जो है प्रॉब्लम से थोड़ा सा है, दोनों ही प्रॉब्लम, लेकिन इशू की प्रॉब्लम थोड़ी सी छोटी है. तो इशू हैव स्मॉल प्रॉब्लम स्मॉल इम्पैक्ट. And there is issues in organic farming. So there are small problems, we can say. And particularly in India, the issue in organic farming in India is that these are the issue for the India. By organic farming, can we produce enough food? Because when conventional farming is converted into organic farming, productivity is reduced, because soil is not in condition to sustain or to produce the crop. Soils are degraded soil or lack the nutrient. So that's why in conventional farming we supply the fertilizers. So when conventional farm convert into organic farm, definitely there is a reduction in yield. So in our country, in our India, population is very large. So can we produce the enough food to such a large population? जब conventional farm से हम organic farm में जाते हैं तो उसकी productivity कम होती है. तो जब अगर हम convert कर दें conventional farm को, तो क्या हम ऑर्गेनिक इतना प्रोड्यूस पैदा कर सकते हैं कि जो हमारी इतनी बड़ी देश कंट्री की पॉपुलेशन को रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे? सो दिस इज द इशू. ओके, सो इट मीन्स द होल एरिया कैन नॉट बी कन्वर्टेड, कैन नॉट बी शिफ्टेड इनटू ऑर्गेनिक. तो स्मॉल एरिया एंड सम पोटेंशियल एरिया और एरिया विच हैव हाई वैल्यू क्रॉप कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो टोटल एरिया इफ वी कन्वर्ट, देन it is impossible to produce fulfill the requirement of people and the livestock. So this is the issue. So this issue can be solved. Gradually convert the small area can be converted, and rainfed area, rainfed agroecology, some ecology have potential for organic farming. So this is the major issue and this is a debatable issue. हमारी कंट्री का बहुत बड़ा debatable issue है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कंट्री को खिला सकें. तो इतना पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहां बहुत अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हो सकता है. रेनफेड एरिया में है, पोटेंशियल एरिया है, ये डिग्रेडेड लैंड है, वहाँ ऑर्गेनिक को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दिस इज दी बहुत बड़ा इशू है. बट इन यूरोपियन कंट्री पॉपुलेशन इज वेरी लेस एंड कल्टिवेटेड एरिया इज लार्ज, so they can produce, so they can survive with the less production because population is less. But in your country population is large and cultivated area is almost fixed, 141 million hectare. तो ये इतने एरिया के साथ हमको सबको खिलाना है, ये एक इशू है. Then second issue is the nutrient requirement, because requirement depends upon the organic crop residue, compost, dung. So we can supply all the essential nutrient through organics. But the major problem is with the nitrogen. Nitrogen supply is the issue, because nitrogen is required in large amount, number one. Then it is subjected to various losses, leaching, denitrification. So how to maintain the nitrogen? It is issue. जो cereals है, sugarcane crop, they require large quantity of nitrogen. So nitrogen management is issue. Then second, micronutrient ore are very less, so there is a micronutrient deficiency. Then we lack the source. So micronutrient की supply कैसे, particularly zinc, copper, manganese. So this is the issue for the micronutrient as well as with the nitrogen, because in nitrogen about 120 kg nitrogen or 150 kg nitrogen per hectare is required for cereals, and for sugarcane it is even high.
So maintenance of nitrogen is very issue. How to maintain this continuous supply of the nitrogen. Then next issue is efficiency of biological agent. Actually, in case of organic farming, we use preventive method, physical methods, and biological methods. And biological methods, we use the predators or parasites or the pathogen, natural pathogen, for the control of disease, insects, as well as weeds also. But the efficiency, because these biological agents are introduced by human intervention, so they are actually not present in abundance in the natural environment. We introduce them, we conserve them, we multiply them, and then they survive. So that's why they are introduced and they are multiplied. So their efficiency is not so high as of a native pathogen or native insects or native disease. तो जो बायोलॉजिकल एजेंट्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं उस एरिया में, मल्टीप्लाई करवाते हैं, कंजर्वेशन करवाते हैं, तो वहाँ इनका जो नेटिव के साथ कंपटीशन होता है, तो मल्टीप्लाई करा के इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी इज इशू. एफिशिएंसी इज नॉट सो हाई एज दैट ऑफ केमिकल्स. तो इनकी एफिशिएंसी पे है कि एफिशिएंसी कैसे हम इंक्रीज करें, हाउ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी सो दैट दे कैन मैनेज द डिसीज एंड इंसेक्ट प्रॉपरली. फॉर एग्जाम्पल, प्रीडेटर लेडी बर्ड बीटल, the conservation and their multiplication is a problem. And similarly for trichogramma, we have to release the trichogramma card in the field regularly so that we can maintain. Then how efficiently they control all the Lepidoptera insects. This is also an issue. So it is a problem, but we can solve by regular release. So ये एक बहुत बड़ी problem नहीं है. Efficiency को हम बढ़ा सकते हैं, regular release करें और उनकी quantity को बढ़ाएं, conservation. So there are different methods. But efficiency is not high, then they are not efficient throughout the year because they are affected by the weather condition, they are affected by the climate, they are affected by the vegetation. So their efficiency is not high throughout the year, and disease, insect, weeds, they are throughout the year. So efficiency is issue. So biological agent efficiency is the problem, and their maintenance, conservation is required on regular basis. Then weed management, it is very, we can say this is problematic issue. We can say to some extent it is a large issue, we can say, because in weeds, actually our emphasis is on prevention rather than cure. So in organic system, the cure is a problem. Where there is a disease or insect, then curative methods are very limited. Or we can say very less curative method, only biological agents are curative, otherwise there are prevention and cultural method to prevent. So cure is less effective by biological agents. So in case of weeds, there is weed emergence, weed seed bank is there. So weeds emerge, then their cure is problematic. So it is issue. So we can use preventive methods, we can use cultural methods and the mechanical methods. But in narrow spaced crop, mechanical methods are not successful. Machines are not designed for narrow spaced crop. So hand breeding is there. And then in widely spaced crop, if we run the machine, then soil should be in workable condition. There should be no too wet, neither too wet nor too dry. ना तो बहुत सूखी हो ना बहुत गीली हो. बारिश हो गई तो वहाँ mechanical problem हो जाएगी. तो weeds impose a problem in organ cultivation, and when we go for hand breeding, more labor is required. It is time taking, number one. It takes more time to eliminate the weeds. Hand breeding में हमको weed करने में ज़्यादा time लगता है. More labor required. Suppose that family labor is engaged in hand breeding, then but it is time taking process. तो इसमें time ज़्यादा लग जाएगा, labor का engagement ज़्यादा होता है. So weeds pose a serious problem in organic farming. Similarly, the cure of this pest cure is another issue. In pest, not only a weed, insect, disease, and the weeds, when they infest or infect or they emerge in the crop, the cure is difficult. अगर ये इंसेक्ट लग गया, आ गया, या डिसीज आ गई या वीड्स आ गए, तो उनको क्योर करना ऑर्गेनिक फार्मिंग में थोड़ा इश्यू है, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रिवेंटिव मेथड्स तो हैं हमारे पास, लेकिन क्योरेटिव मेथड केवल बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो उसको किल करें. क्योर तभी होगा जब वो किल होंगे. अब जो बायोलॉजिकल एजेंट है उनकी एफिशिएंसी लो है. सो दिस इज द प्रॉब्लम इन द पेस्ट क्योर. सो दिस इज द इश्यू. तो ये रीज़न है कि अगर हम वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और कुकर बिट्स कर रहे हैं, खीरा कर रहे हैं, उसमें इफ देयर इज इंसेक्ट देन इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल. सो दिस इज द इशू in organic farming.
So that's why we have to rely more on cultural practices, physical practice, prevention. So that's why prevention is the main theme. Prevention is better than cure. उसको हम पहले से ही प्रिवेंट करें, उसको आने ना दें, क्योंकि क्योर करने में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी. Then produce quality which is produced by organic farming is actually superior, and how much superior compared to conventional or chemical farming. जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्वालिटी इज सुपीरियर. कितना सुपीरियर है? हाउ मच इज द प्रोटीन कंटेंट, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, व्हाट इज द अमीनो एसिड प्रोफाइल, चेंज इन अमीनो एसिड प्रोफाइल और नॉट. Definitely it is free of chemicals because we are not applying the pesticide or fungicide or any insecticide. Definitely it is free from toxic chemicals. But when we talk about the quality with respect to amino acid profile, how many amino acids are there, protein content or the fat content or carbohydrate content. So protein content is more than that of conventional farming. हम जो गेहूं उगा रहे हैं, मान लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हुआ कन्वेंशनल फार्मिंग से? टॉक्सिक रेजिड्यू तो नहीं होंगे, कोई हर्बिसाइड का रेजिड्यू नहीं होगा, हमने हर्बिसाइड नहीं डाला. देयर इज नो इंसेक्टिसाइड रेजिड्यू बिकॉज वी डू नॉट अप्लाई इंसेक्टिसाइड. नो फंजीसाइड रेजिड्यू बिकॉज वी डू नॉट अप्लाई द फंजीसाइड. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रोटीन, फैट, तो क्या इनका कंटेंट ज़्यादा होगा, नहीं होगा? अगर होगा तो कितना ज़्यादा होगा? सेकेंड, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट suppose we are growing the crop in chemical farming and we are applying the insecticide in recommended dose, then residues are there, but in MRL, maximum residue limit, under the maximum residue limit, and they are degraded in the system. तो अगर उसका प्रोड्यूस हम ले रहे हैं केमिकल फार्मिंग का, तो वो तो डिग्रेड हो जाएगा अगर MRL से नीचे है, मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट से नीचे है. तो एंड नाउ इन ऑर्गेनिक फार्मिंग देयर इज नो रेजिड्यू. तो इस रेजिड्यू जो नहीं है और जो MRL से नीचे है, क्या वास्तव में दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? नहीं है. इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इफ द रेजिड्यू इज बिलो द MRL, मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट, एंड नो रेजिड्यू? Definitely there is impact, because when residue is there and we degrade, so body has to metabolize the some functions, so some functions are there. उसको रेजिड्यू को मेटाबलाइज करने में एनर्जी डाइवर्जन होता है, बॉडी का नेचर चेंज होता है, भले ही वो रेजिड्यू लिमिट से नीचे हो. दिस इज द एडवांटेज ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी. बट हाउ मच? If we are using such type of practice, so how much is the quality superiority, particularly with respect to nutrient content? So this is the issue. Then organic farming is economically viable if give high return, if give return equal to chemical farming in short run or long run. If a farmer change his conventional farm or chemical farm to organic farm, can he get the same return? अगर हम कन्वेंशनल फार्म को ऑर्गेनिक फार्म में कन्वर्ट करें तो क्या हमें उतना ही इकोनॉमिक रिटर्न मिलेगा, उतना ही पैसा मिलेगा जितना कन्वेंशनल फार्मिंग बनता है? पहले तो यह है. सेकंड, कैन वी मेंटेन द रिटर्न, कैन वी इंक्रीज द रिटर्न विद द टाइम? सो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इज इशू. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हेन देयर इज ए कन्वर्जन पीरियड, मीन्स कन्वेंशनल फार्म इज कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट प्रोडक्टिविटी इज डिक्लाइन and at the same time return is decline. But once the farm is developed, organic farm is developed, the natural system is there, biodiversity is maintained, biological cycles are maintained, then production increases because of biological cycle, biological interactions, natural cycle. जो सिस्टम बन गया है, ऑर्गेनिक मैटर बन गया है, बायोलॉजिकल साइकिल बनी, उससे प्रोडक्शन सिस्टम बढ़ेगा, देन इकोनॉमिक रिटर्न विल बी हाई. So because now input cost is reduced, because we are using on farm resources, there is no purchase from the outside. Number one, cost is reduced. Second one, प्रोडक्शन इज इंक्रीज, तो वॉल्यूम क्वांटिटी इज इंक्रीज, तो ज़्यादा क्वांटिटी है ज़्यादा रिटर्न आएगा. थर्ड, इट इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, सो वी गेट प्रीमियम प्राइस, देन वी गेट द मोर रिटर्न. तो मोर रिटर्न, मोर प्रॉफिट इज ड्यू टू रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बिकॉज वी आर यूजिंग ऑन फार्म रिसोर्सेज. नंबर वन, वी आर गेटिंग मोर प्रोडक्शन, so more return and superior quality, so we get a premium price of superior quality. So in the long run it is feasible, but this feasibility can be maintained. Can we maintain the economic feasibility in short run? Can we maintain feasibility for the small farmers? So this is the issue. Yes, we can maintain the economic feasibility if it is developed into a organic farm. अगर ऑर्गेनिक फार्म में प्रॉपर जैसे स्टैंडर्ड से उस पर हमने कर लिया, देन इट इज feasible, but in short run it is not feasible because conversion period is 3 years. We have to wait for 3 years. The produce is certified after the 3 years when it is converted. So during the 3 years we do not get the premium price and the production is reduced. So during the 3 years economic benefit is less, but after the 3 or 4 or 5 years we get the more benefit. So this is the economic feasibility in a short run is under question. It is a issue. लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा अगर हम लॉन्ग रन में चलेंगे. So that's why when if you want to develop the organic farming or to develop farm or organic farm, so we should plan a long strategy.
Then is there any significant effect of organic farming beside the nutritive food or the toxic free food, or significant impact on the environment? Is there CO2 mitigation, or is there any CO2 sequestration, or there any purification of drinking water, or is there any contaminant elimination from the soil which is significant? तो क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग से कुछ और भी दूसरे इफेक्ट्स आते हैं जिसका हमें कुछ प्रभाव नजर आता हो, कुछ इन्वायरमेंट में CO2 का सिक्वेस्ट्रेशन हो गया हो, या हमारा ड्रिंकिंग वाटर साफ हो गया हो, या सॉइल के कंटामिनेशंस कम हो गए हो? तो ये भी एक इशू है. डेफिनेटली देयर आर बेनिफिट्स. सॉइल फर्टिलिटी इज इंप्रूव, pollution is reduced, environment is clean, drinking water is clean. So there is effect, but can we there is a remarkable difference due to organic farming. So this is the issue. So in short run we cannot get the advantage, we cannot get the significant advantage in short run, but when we practice over the long run, suppose we are not applying a fertilizer for 3 or 4 or 5 year condition, definitely soil is not contaminated. Soil is contaminated with the heavy metal due to fertilizer application. जब हम fertilizer डालते हैं उसके साथ heavy metals आते हैं. When we apply the nitrogenous fertilizer, particularly urea, which is highly soluble, there is a nitrate leaching, and nitrate cause the drinking water pollution. So nitrate in drinking water cause methemoglobinemia. This is the problem. Eutrophication is there. When we apply the fertilizer, there is surface runoff, and it causes the enrichment of pond, lack water, nitrogen, phosphorus, and other nutrients. Algal bloom is there, and it causes eutrophication. This is another problem. When we use this organic farming, there is no surface runoff, there is no fertilizer application, there is no leaching, there is no eutrophication. So effects are there, but these effects are realized in long run. So these are the issue, and the major issue is the enough food in our country. This is the, we can say it is the large issue or largest issue. So if we convert the organic, total organic, then it is not possible to feed the whole population. So this is the issue. So it means organic farming cannot be practiced in whole country. It can be practiced in the location, in the area where it fits. Every technology, every system has its location. हर टेक्नोलॉजी का अपना एक लोकेशन होता है जहां वो परफॉर्म करता है, सबसे अच्छा परफॉर्म करता है. तो वी हैव टू फाइंड वेयर द साइट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी. हमको वो टेक्नोलॉजी देखनी पड़ेगी कहाँ उसको अडॉप्ट हम कराएं. फॉर एग्जांपल जीरो टेक्नोलॉजी, जीरो टिलेज. Zero tillage has some benefits, and it cannot be applied in all the area, but it can be applied in delayed sowing. If we want to utilize the residual moisture in wheat sowing, then zero tillage is very good. If we want to reduce the fallow minor population, zero tillage is very good. So zero tillage has its own location, own site, then it perform well. अगर हम नॉर्मल कंडीशन में जीरो टिलेज करेंगे तो देन वी कैन नॉट गेट सो मच एडवांटेज. सिमिलरली ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज इट्स ओन साइट and locations, and we practice the organic farming on the site, on the location, then these issue can be solved easily. So these issue, there are issue and can be solved if we judiciously use organic farming in long run. So these are the some issue particularly in India related to organic farming. Thank you very much.